सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। और शक्ति से ही सारी दुनिया संचालित है, ये युद्ध भी शक्ति से ही जीता है। सिंदूर के नाम से ही हमें पता चल गया कि कितना सम्मान करते हैं और कितना आदर देती है। और व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी को प्रणाम तो करना ही चाहिए हम लोगों को। जब भी भारत की कंटेम्पररी हिस्ट्री, इतिहास की बात होगी तो ये होगा डिमार्केशन, प्री सिंदूर पोस्ट सिंदूर। भारत को भी और अमेरिका को भी, दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है, पूरे जियो पॉलिटिक्स में भी बहुत जरूरी। जवाब देना भी भारत ने ही सिखाया कि अगर देना है तो इतना कॉम्प्रहेंसिवली डिसिसिवली देना चाहिए। तो इसके बाद तो मुंह तोड़ जवाब, मतलब उसी को तो कहते हैं न्यू मोदी डॉक्ट्रिन कि इफ यू हर्ट अस और आवर सिटीजंस थ्रू योर प्रॉक्सी वॉर्स, थ्रू योर टेररिस्ट, वी विल गेट इनसाइड योर टेरिटरी एंड डू व्हाटएवर वी फील लाइक डूइंग। कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी समय नहीं है। One important thing is here, there is an economic aspect also here, and you see here that कि अफ्तांश भाई, मधुकर जी, आप लोग भी अपना विचार दीजिएगा। बहुत साइलेंटली और प्रतीकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से भारत ने एक बात कही है कि भाई हमारे पास ब्रह्मोस है और हमारे पास आकाश मिसाइल है और इसका भी अपना मार्केट होगा। केवल अमेरिका के उपकरणों का और रशिया के उपकरणों का और या चाइना के उपकरण पता नहीं क्या है क्या नहीं है, भगवान जाने। लेकिन तो उनका जो अपना मार्केट है, लेकिन हमारा भी अपना मार्केट होगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम गोइंग फॉर मार्केटिंग वार और समथिंग लाइक दैट, but it always counts, right? So it is always, you have an economic aspect of it. So एक बहुत बड़ी बदल है, ये बहुत बड़ी बदल है अंदर से। आप यदि देखेंगे तो कैसा लगता है हरिता जी? what do you think about that? Yeah, from being a net importer of defense supplies, India is now emerging in making new ventures in defense export. Like as you say, like some reports have put it, like India has exported defense supplies worth 24,000 crores, and they have set a target of 50,000 crores for 2030. So that is the kind of an aspiration towards which India is moving forward. So like आपने जो बताया कि ये वॉर के, मतलब ये वॉर नहीं कह सकते, या एक्सटेंडेड सर्जिकल वॉर जो मधुकर जी ने बताया, वो हम शब्द यूज कर सकते हैं। मतलब उसके दायरे से इंडिया ने ये साबित कर दिया कि लाइक हमारे जो वेपन सिस्टम है या हमारे पास जो भी है, मतलब पूरे इंडिजीनियस भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बारे में मोदी जी ने एक शब्द बताया कि जब वो आदमपुर एयरबेस गए थे तो वहां उन्होंने बताया कि ए राइट मिक्सचर ऑफ टैक्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो जो हमारे पास वेपन्स है उसको लाइक स्ट्रेटेजिकली हमने यूज करके इस तरह की फोर्ट्रेस जो हमने बना दिया कि वो पाकिस्तान भेद नहीं पाया। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजी और टैक्ट जो हमने दिखाना है बड़े बड़े पावर्स को, हमने दिखा दिया। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि उसके तुरंत बाद ही यूक्रेन ने कहा कि हम लाइक तैयार है टॉक्स के लिए रशिया के साथ, और रशिया को भी लगा कि लाइक अगर आप टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, इतना प्रोलॉन्ग्ड वॉर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटेड और लाइक प्रिसाइज स्ट्राइक से आप अपने बात भी रख सकते हो कि हम इतना दूर जा सकते हैं, इतना डैमेज या नुकसान हम कर सकते हैं। तो इससे ये भी साबित हो गया, मतलब एक तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट आप कह रहे थे वो भी हो गया, और दूसरी बात ये भी है कि हमने ये भी दिखा दिया कि हम
वॉर कैसी लड़ी जा सकती है और उसको कितनी जल्दी ही उसको लाइक प्रोलॉन्ग्ड वॉर ना बनने दे, लेकिन वो पूरी तरह से उनको मैसेज तो दिया जाए कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो अवतार जी आप कुछ कहेंगे? No, I just want to re-emphasize what Harita ji had basically said. It's, most of the time it's not how you fight the war, it's how you get the result. And, the 3 days have proved that we can get the message. India can get the message. India can achieve the maximum impact from the technology and the strategy across the border, and that's not a mean thing to achieve. And despite all misinformation and disinformation, it has been now proven now through, even though I'm not a big votary of the New York Times and Washington Post, they're all, in my opinion, fake news, but everybody goes by that. Now you can see even they have acknowledged the India's superiority in the skies. They through the all the pictures, satellite images that they have shown. So they have shown that India did extensive, very precision, extensive damage inside Pakistani border. And the two evidence that they have presented so far, that the Indian plane was damaged, is not conclusive at all, because one was that the fuel tank that was dropped, they show the fuel tank. So the fuel tank is the drop tank or fuel tank, something. I forget the technical term. It's a debris of that. So that's just the fuel tank. When the pilot that can always happen, right? No. It's a technical thing to do. When you are in danger, you drop that extra tank and get away. So there's no plane inside. They have not shown a downed plane, only the tank. Okay, which is okay. Maybe the plane got damaged, got hit, but they were able to, drop the tank and move out and get away from that very safely. And दूसरी बात वो तो उसका दिखा रहे हैं, किसी रफाले का कुछ दिखा रहे, but that's on X. That was sourced on X. Somebody was showing. So those are not proof, but भारत की तरफ से जो भी है, जिसने जिस चीज का दावा किया उसका proof है. So it shows that the capability of the Indian Armed Forces, especially the Air Force. Even New York Times में सैटेलाइट इमेजेस को दिखाया, और वॉशिंगटन पोस्ट में आज भी उसकी चर्चा हुई. तो काफी, और जैसा कि आपने कहा अवतार जी कि ये लोग, ये वाम का गिरोह है ये लोग, और उसके बावजूद ये लोग ऐसा लिख रहे हैं, तो अंदर अंदर आत्मा में कुछ बात आई है, है ना? तो मधुकर जी हम लोगों के साथ हैं या नहीं है अभी? है, मैं हूँ. अच्छा, छोड़ के जाइएगा नहीं सर? हाँ, छोड़ के नहीं जाना है. मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ सतीश जी. जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ जाए. आपकी आवाज को कौन रोक सकता है? और ये उसके अभी जो जाने की बात कर रहे थे, तो उस पर आगे अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी ना जाओ छोड़ के, है ना? नहीं जाऊंगा. और सबसे और दूसरी बात ये भी है, हम लोग तो यहाँ हमारे यहाँ तो अब कितना बज रहा है? 11:15 बज रहा है. तो मैं ये भी कह सकता हूँ, सुना है तेरे महफिल में रत जगह है. हाँ. सही बात है. मैं ये कह रहा था कि ये जो 3 दिन का जो डिमोन्स्ट्रेशन है, इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन स्ट्रेटजी, इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटजी, ये आप देखिएगा बहुत से विश्वविद्यालयों में ये केस स्टडी बने. बहुत अच्छी बात है. एक तरफ 2 साल से युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन में, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे. बिल्कुल.
एक हमास वर्सेस इजराइल भी चल रहा है, और यहाँ पर इतने 25 मिनट के अंदर, सिर्फ 25 मिनट के अंदर भारत ने एक निर्णायक स्तर पे जाके खड़ा हो गया, जहां अपोनेंट कंट्री को मतलब ये हालत हो गई कि पूरे विश्व भर में भागने लगा, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, हमको बचाओ, नहीं तो हम तो खत्म हुए। तो ये एक केस स्टडी तो बनने वाली है। दूसरी बात है, नीतियों में फर्क हो गया। अब त्रेता में भगवान राम मर्यादा के नाम से, जब मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते थे, और द्वापर में कृष्ण जी ने मर्यादा से ज्यादा उस समय क्या आवश्यक है वो धर्म बना दिया। तो यानी वर्किंग स्टाइल ऑफ भगवान राम एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ श्री कृष्णा इज एंटायरली डिफरेंट। और तो दोनों विष्णु के अब अवतार ही हैं। अब ये कलयुग है, तो कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आप रह नहीं सकते। रिजल्ट आप रह सकते हैं, रिजल्ट आपके फेवर में कभी नहीं आए। इसलिए जो मोदी जी हैं और मोदी जी का जो भी पूरा सेटअप है, यानी बीजेपी का सेटअप है, उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब भैया सठे साठे समाचरे करना पड़ेगा, बर्दाश्त की एक सीमा होती है, और उन्होंने करके दिखा दिया, और बहुत ही सटल वे में दिखाया, क्विक एंड फास्ट दिखाया। 3 दिन के अंदर पूरे विश्व में उन्होंने बता दिया कि बस एनफ इज एनफ। या सीधी सी बात। और ये बहुत मायनों में युद्ध, मतलब इसका वो विश्लेषण किया जाएगा, और केस स्टडी है कि किसी देश को कैसे एक्ट करना चाहिए जबकि होस्टाइल एटमॉस्फेयर हो, और या ऐसा एटमॉस्फेयर हो जिसमें हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि कौन महाशक्ति या कौन बड़ा देश हमारे साथ खड़ा हो। सबके अपने बिजनेस इंटरेस्ट है, उसी नाते सब एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सच्चाई तो यह है कि दुनिया एक बाजार बन गई है, बहुत बड़ी बाजार है, और भारत बड़ा बाजार है ही है। इसलिए मीठे शब्दों में बोलना सबकी मजबूरी है भारत के साथ। लेकिन भारत अब 2014 से पहले वाला नहीं है, सीधी सी बात है। एक बात भारत अब यहाँ पर ये आती है, हरिता जी, आपने एक लेख लिखा है माइंड मेकर्स में कि मोदी ड्रॉज न्यू रेड लाइंस, और बहुत ही अच्छा लेख है, बहुत ही अच्छा लेख है। मगर एक प्रति प्रश्न है, काउंटर क्वेश्चन है इस पे आपके लिए कि डू यू थिंक ड्रॉइंग दिस न्यू रेड लाइन will become a challenge for India in some ways later? Because Pakistan is never going to change. So this red line will get more red, and I would say redder, reddest, whatever, more red, most red. How do you see it, नहीं, Harita ji? let me put it in this way, like रेड लाइन उसको कहेंगे, और या उसको नॉन नेगोशिएबल्स भी हम कह सकते हैं। तो उसके बाद ये बन जाता है कि दीज थिंग्स आर ऑफ द टेबल। तो इसका मतलब हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। आपकी नहीं तो करें। इसका मतलब क्या हुआ कि कश्मीर तो अब टेबल पे कभी नहीं आएगा। तो अब तो ये साबित हो गया है कि वो हमारा हिस्सा है, अभिन्न अंग है। तो कश्मीर के बाद तो आप भूल ही जाओ। तो अब बात कुछ करना है तो पीओके के बारे में ही POK करेंगे, और टेररिज्म के बारे में ही करेंगे। ये एक दृष्टिकोण है उसको देखने। The other side of the coin is like, by setting this high benchmarks, what we have done is like, you have positioned India in such a way that like we are a strong country, and then we stick to these kind of ideals, or this is our objective, or this is what we are expecting from Pakistan. And if you want that peace should prevail, then you should reign on Pakistan or control its terror activities and things like that. So you cannot just always say that India is the one which is instigating, or this completely rules out the fact that India is the aggressor. But it says that India has till now borne the brunt of Pakistan's terrorism, and so now it has come out with a doctrine saying that these are our red lines. So
इसके बाद हम इसके अलावा कुछ बात ही नहीं करेंगे. And then that is what they have done. Like from 2015, after the Pathankot strikes, they have made it absolutely clear that we are not going to talk with Pakistan. They have even allowed Pakistani team to come and investigate and then present all those Pathankot investigation report. But they Pathankot. haven't done so. Yeah. So that is one thing. And the second thing is also this. India was sick and tired of producing dossiers after dossiers to UN and other international forums, saying that these are the terrorist outfits which have launched terror attacks on India. So please take an action, designate them as international terrorists. But then China has at every form stopped that. So with this, India is going to put a full stop to all these kind of futile attempts and futile activities which held no meaning or nothing has come out of all these kind of things. All the negative assumptions and speculations, right? Exactly. So it has put its word very clearly, saying that ये है हमारा approach. इससे हम मुखरने वाले नहीं हैं, बस. एक और बिंदु आता है. आपने बात की कि क्या क्या बात होगी, ब्लड एंड वाटर एंड ऑल दोस थिंग्स. सो वाटर पे जो इंडस वाटर ट्रीटी, व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या है इसका भविष्य, क्या होने जा रहा है, भारत क्या करने जा रहा है? India should start building dams at rapid pace and start utilizing that water. It's our water. We have been extra generous with Pakistan in giving all this stuff. So you can see this kind of an approach, like we have been generous with water, and now it has emerged that Indira Gandhi wanted to share the nuclear technology. And then after 1971 war, what has happened? We have given away 93,000 PO, prisoners of war. But what we get after that? We didn't get anything out of it. So this is the time we should position ourselves as a strong country. Generosity aside, these are the realistic terms that we need to deal with a rogue state like Pakistan. So that realization has dawned upon administration, and that's now reflected in their policy. So मधुकर जी से और अवतांश जी से मैं पूछना चाहूंगा कि भारत क्या इस बार एक कठोर संकल्प के साथ उस पानी की बात करेगा और अब देश के पानी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा? पानी का मतलब सम्मान भी. हाँ, बिल्कुल. देखिए, मोदी जी का जो भाषण था टीवी पे, उसमें तो साफ उन्होंने कहा था कि हमने सिंधु जल समझौता वो स्थगित, उसको खत्म नहीं किया है. मतलब कि हम वापस पुराने मोड में नहीं गए, वो वहीं का वहीं पर है, सीधी सी बात. और पानी ऐसी चीज है जिससे हम बिना एक गोली चलाए, उस बार भी हम लोगों ने बात की थी, बिना एक गोली चलाए हम पाकिस्तान को घुटनों पे ला देंगे. वो पानी हमारा है, जैसे हरिता जी ने कहा कि वो पानी हमारा है. और नेहरू जी तो बहुत बड़े जेनरस थे, सो कॉल्ड. उन्होंने देश का बंटवारा भी कर दिया, भाई चलो तुम कंट्री बना लो, ठीक है. पानी भी दे दिया, भाई तुम 80% पानी ले लो. ही वॉज वेरी जेनरस. वो तो अलग ही विषय वाले व्यक्ति थे. तो उनके ही पापों का फल भारत आज भोग रहा है, चाहे कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जो भी हो, वो भोग हम लोग हैं. उन्होंने बड़ी जेनरसिटी दिखाई भारत के साथ और उनके साथ. तो कहने का मतलब है, मोदी जी इज नॉट गोइंग टू रिट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट ही हैज सेड इन पब्लिक, ठीक है ना. और वही एक चीज है जो उन्हें अमर बनाएगी, वो हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं. और दूसरी चीज है, वही एक चीज है जो विश्व में भी ये संदेश देगी कि नहीं, अब भारत वो लुजुर पुजुर वाला देश नहीं है, ढीला ढाला. जो कह दिया उस पर स्टिक. और अगर उससे पीछे आना पड़ा या उसको नॉर्मलाइज थोड़ा करना भी पड़ेगा, तो उसमें शर्तें होंगी. जैसे अभी पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने शर्तें लगा दी कि अब तुम अभी इसी वक्त से प्रोबेशन पे हो, तुम्हारी हर एक चीज पे हमारी नजर है, और तुम जरा भी कुछ करोगे तो हम वो पॉज हटा देंगे. सीधी सी बात, ये पॉज्ड है, ये कैंसिल नहीं किया है उसको, ना हम एग्जिट हुए हैं उस मोड से, हम उसी मोड में हैं, पॉज है, बस सीधी सी बात है.
तो कहने का अफजल मतलब जी, है अब वातावरण बदल चुका है। अफजल जी, जी। आपको लगता है, आप अमेरिकी मीडिया को भी समझते हैं, काफी लिखते पढ़ते हैं, तो अमेरिका उस पानी की नीति को लेकर भारत पर दबाव डालेगा और भारत पर कुछ नकारात्मक असर इसका हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि इसका कोई नकारात्मक असर होगा। अम, और दुनिया के और देशों का इसमें कोई एजेंसी भी नहीं है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं, और कह के कर भी लेंगे क्या? दे डोंट हैव एनी वे ऑफ गेटिंग देयर वे इन दैट, they don't have their way to put any pressure on India to do anything right now. So I don't think it will have any negative impact. I mean, आप देखिए भारत में कितनी नदियों का पानी आता है दूसरे देशों से। सब क्या फ्री में आता है? सारे देश जहां जहां से उन नदियों की उत्पत्ति हुई है, मैक्सिमम वही लोग रखते हैं ना। तो अगर भारत ऐसा करता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई असर पड़ने वाला है, और इसका किसी दूसरे देशों में को इसके लिए कोई वो भी नहीं है, लेवरेज भी नहीं है इसके ऊपर कि भारत पर लगा सके। दूसरी एक बात, एक सकारात्मक और एक थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष आप देखेंगे। मैं फॉरेन अफेयर्स के एडिटर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, और जीपीएस पर फरीद जकारिया के साथ। तो फरीद जकारिया को तो आप लोग जानते ही हैं, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद भी मेरे ख्याल से रवि अग्रवाल उनका नाम है, और वो ये फॉरेन अफेयर्स के जो एडिटर हैं, उन्होंने उन्हीं बिंदुओं को हाईलाइट किया, उन्हीं बिंदुओं को चिन्हित किया जिन बिंदुओं पर आप लोग बात कर रहे थे कि भारत मजबूत होकर निकला है ना। और ये फरीद जकारिया के प्रोग्राम में जीपीएस में जाकर के ये बात बोलना और ये बात कहना, और फॉरेन अफेयर्स मैगजीन भी तो आपको तो पता ही है, आप लोगों को तो पता ही है कि है क्या। तो उसके बाद भी तो ये बहुत बड़ी बात है वस्तुतः। उसी में पर आज मैं एक 2 दिन पहले का एक आर्टिकल था, उसको पढ़ रहा था, और ये लिसा कर्टिस का है, और उसमें एक अजीब सी बात है, मतलब रेखांकित करने वाली बात है, और भारत को इससे आगे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसमें वही उपदेश चालीसा है कि उपदेश चालीसा ये है कि हाउ कैन अमेरिका कीप पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो एक ही लाइन मैं कोट करूंगा, और आप उससे दृष्टिकोण देखिएगा, और ये चहलकदमी होगी कि वाशिंगटन शुड फोकस ऑन डीलिंग विथ क्राइसिस, नॉट रिजॉल्विंग अंडरलाइन टेंशन। तो ये तरह तरह के जो सिद्धांत है ना इन लोगों का, वो आएंगे, और मैं समझता हूं कि भारत अपनी शक्ति और क्षमता, अपनी योग्यता और अपने निर्णयों के आधार पर ऐसे ऐसे संदेहों और ऐसी प्रवृत्तियों का जवाब देने में सक्षम है। और कोई बात आप लोग कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? एक बात और आती है, मैं भूल रहा था उसको, कि मोदी जी ने जो बात कही वो ठीक है, लेकिन मोदी जी ने, और आप सबों ने उस बात को रेखांकित भी किया, जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जो सेनाध्यक्षों के द्वारा, जो सेना के पदाधिकारियों के द्वारा, वो काफी प्रभावकारी रहा। कैसा आपको लगता है? और एक बार तो मुझको लग रहा था कि अवतंस जी आप उनका स्क्रिप्ट लिख रहे थे कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक बर जाता है, क्योंकि आपने ठीक 2 दिन पहले वो पंक्तियां पूरी दिनकर जी की, मुझे याद है कि आपने उद्धृत की थी एक्स पर। हाँ, मैं जो सतीश जी ने भी पूछा, तो मैं वही इस बात को फिर से दोहराऊंगा कि ये पहलगाम घटना के बाद जो 10-12 दिन मोदी सरकार ने लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए,
उसमें यही सब चीजें, यही स्ट्रेटजी पे बहुत माइन्यूटली विचार हुआ, कैसे इसको हम ये करेंगे, तो हम ये तो करेंगे ही करेंगे हम, जो ये 3 दिन का हुआ, लेकिन इसको पब्लिक के सामने, इंटरनेशनल मीडिया कैसे के लाए? सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो अभी क्या आपको याद होगा, वो उरी और बालाकोट वाले विषय में आज भी लोग जो हैं, सबूत गैंग जो है वो सबूत मांगता रहता है, प्रमाण ठीक है। मांगते हैं। इस बार उनके मुंह पे उन्होंने टेप लगा दिया डे 1 से कि ये सैटेलाइट इमेजेस हैं बिफोर एंड आफ्टर, अब तुम बोल नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो वो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी, और हमारे यहाँ भी तो 0.50 एक मोर्चा है ना देश के अंदर, जो, हाँ, तो उसको साइलेंट कर, अब की बार देखिए किसी ने भी नहीं मांगा कि क्या प्रूफ है, क्योंकि डे 1 से मिलिट्री ऑफिशियल्स अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बता रहे हैं कि क्या है। ये देख लो भैया, अभी भी देख लो, ये पहले था, ये बिफोर आफ्टर वाला, वो फेयर एंड लवली टाइप का, उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि ऐसा मामला है, आप देखिए। तो एक एक पल की डिटेल्स उन्होंने दी है, एक एक एक्शन की डिटेल दी है, तो बोलने वाला कोई नहीं है इसमें। दूसरी चीज ये है कि, एक सेकेंड सर, ये अननेसेसरी, हाँ, दूसरी चीज ये है कि बहुत गंभीर मीटिंग, यानी हम लोग यहाँ टीवी पे तो दिन में 3 बार तीनों सेनाध्यक्ष मिल रहे हैं जाके। हेलो, हेलो, हाँ, आपका आपका वीडियो लगता है। एक सेकेंड, अभी आ रहा, अब आ गया। आ गया। यानी हम लोग यहाँ देखते रहते थे कि दिन में 3 3 बार तीनों सेनाध्यक्ष, हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी और मोदी जी, इनकी मीटिंग हो रही है, तो ये चाय पीने तो जाते नहीं होंगे, तो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर, एक्शन प्लान के ऊपर, उसके आउटकम के ऊपर, और एक्सपेक्टेड क्या देश के अंदर क्या बोला जाएगा, क्या पूछा जाएगा, किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, यानी इतनी डिटेल्ड माइन्यूट प्लानिंग मैंने तो, मेरे मेरे इवन कारगिल में भी हमने नहीं देखी थी कि ऐसी कुछ होती हो। यहाँ डिक्लेयर करके जाते थे कि मतलब ठीक है, ये प्रधानमंत्री निवास में मीटिंग हो रही है, साउथ ब्लॉक में मीटिंग हो रही है, सब चीजें। तो बहुत, मतलब उन्होंने हर उस न्यूसेंस को दिमाग में रखा है कि इससे ये न्यूसेंस होगी, इससे ये न्यूसेंस होगी, डोमेस्टिक उसमें भी और इंटरनेशनल उसमें भी। तो कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ उन्होंने, वो किसी दिन एक फिल्म बनेगी देखिएगा बॉलीवुड में, वो 25 मिनट, उसका टाइटल यही होगा, वो 25 मिनट, जिसमें 11 एयरफील्ड को उन्होंने जो है तबाह कर दिया, एवं आर्मी हेडक्वार्टर के पास जाके उन्होंने बम फोड़ दिए, और न्यूक्लियर साइट्स के आसपास भी अनकहे उसमें फोड़ दिए। तो ये हॉलीवुड को बनाना चाहिए इस फिल्म को, वो 25 मिनट। तो इतनी डिटेल्ड प्लानिंग थी, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई अब बोलने की गुंजाइश है किसी भी को, चाहे डोमेस्टिक ऑडियंस हो, नेता हो, या इंटरनेशनल। अवतान जी, हरिता जी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा था, उस समय थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं, कि देखिए, अमेरिका की जहां तक बात है, इंटरफेयर करने की जहां तक बात है, खास तौर से इस करंट एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात है, उसका अपना अमेरिका फर्स्ट ये है ना, उसी पे वो चलते हैं। नॉन इंटरवेंशन वो भी उनका है। आपको याद होगा जब शुरू लड़ाई शुरू हुई, हाँ, तो जेडी वैंस का स्टेटमेंट था, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड एंड ऑल दैट। सो दैट्स वेरी क्लियर, and I think that proves that that hasn't changed, only because the nuclear N word got inserted. That's how US got involved in that. Another point I want to make is that, see, the current administration in the US, the relationship that it has with the EU, okay, it's completely gone. So Europe does not
fit into the picture of U.S. U.S. foreign policy as much as it did just 6 months ago, because whoever is planning or who has this strong voice in the foreign policy in Trump administration, they have come to a conclusion that there's nothing in Europe that they can do. Europe is almost dead. There's nothing going on in trade-wise, technology-wise, economic activities, because they have self-inflicted a lot of pain from all the wokeism that the energy, the green energy, and this and that they are, and if you just read the news today, the FDI in Europe has declined by 30%, lowest in 9 years. So they have come to a conclusion that Europe is not the place where they're going to put a lot of focus in. So their focus is now Middle East. That's why the first international visit by President Trump is not Europe. Okay. Also keep in mind, they can go to the extent of antagonizing some of their closest allies. So, whether it's Europe or Canada or Mexico, the largest trading partners and the closest allies. Canada is Five Eyes as well. So there's a lot of things going on. Still, they are not immune from Trump's, antagonization. Trump did whatever. Do you think? Yeah, you want to say something else? Yeah, I just wanted to finish that with this backdrop, that whatever Trump has said for India, or in terms of India and Pakistan, you should put those things into perspective in the backdrop, and then analyze what he says and what he means, and to what extent he can go for his agenda. But he also have to keep in mind that his now the greatest focus is in Indo-Pacific for the Trump administration. So in that case, they still need India. They still need the Indian subcontinent peaceful, at least, and they need India's support to counter China in that area. So, but coming to that point, actually, yeah. Tell me. Go ahead. No. That's all I wanted to make sure that when we analyze everything that's going on, we need to put these things into perspective: the Europe, the Canada, the Mexico, and Middle East, and then China and Indo-Pacific, and analyze all these things with that backdrop. एक चीज हरिता जी, अब तीनों लोग बताइए, क्वाड पर क्या इसका कुछ नकारात्मक असर पड़ेगा? अभी जो ट्रम्प की जो आगे पीछे वाली बात हुई है. नहीं, I want to make 3 things here, only 3 points. The first thing is like क्वाड का आपने जिक्र किया था, लेकिन I just want to point out like now so many questions would arise on Quad and the kind of a security coalition which they say it is. One is like India, throughout these 3 days, it has been proven that no country, no power has come in unequivocal support of India. Okay, so it goes on to say that India, when it comes to these kind of conflicts, has to fight its own battles. That's one thing. The second thing, had it been the same case with any other Quad partners, meaning to say that if Japan, Australia, and Russia, US have been facing this kind of similar conflicts, had the other Quad partners not issued any kind of condemnation, strong condemnation against the adversary? That's another question. The second question, like what comes out of it is like throughout his statements, Trump has
referred to India and Pakistan in the same statement in the same way. So it means to say that like Trump is again going back to the same kind of an old US administrative doctrine of hyphenating Pakistan and India together. Okay, which is like what he has like, I mean that he said he is going to be, at least he made to feel India that it is going to be special and it is different from Pakistan, because like he has openly stated that Pakistan is a terrorist state. But then by going back on his own words and hyphenating India and Pakistan today in the same language, he is again going back to the same old philosophy of US administration. So that is questionable. And then this brings out a perception that US is not going to be a reliable partner for India ever. Okay. So India always had this kind of a trust deficit when it comes to US. And Trump's statements have reinforced that like he doesn't have a special place for India. So that is another thing. The third thing which I want to say is India always knew that this is going to be the scenario. So that's why it has conclusively presented the facts before the world, showing that this is Pakistan, the terror state and the fountainhead of terror. And we are India, which is a responsible state, which know how to deal with the rogue state. And you yourself can come out and tell us like if you are with us or if you are with Pakistan, because like we are fighting a war against terrorism and we stick to a zero tolerance policy towards terrorists. So these are many different things that we can strategically derive from these operations which India wanted to make. This is a statement that India has made to the world, saying that we are different. You cannot equate us to Pakistan. Pakistan is a terror state. And it has also proven that like whosoever is going to side with Pakistan are not going to be, or like, for example, in case of US and China, which has sided with terrorism, it is now proven that they are not against terrorism and they are complicit in terrorism and they are ready to use Pakistan as a vassal state to counter India or to destabilize India. So these are the basic messages that Operation Sindoor has brought up. One thing here, and I would quickly like to add a couple of things, if you don't mind, because we are talking about Indo-US relationship now. So that was my question actually going to. Yeah. So, you know, quick point, notwithstanding what Mr. Trump has said, and definitely, like Haritaji said, that there is a possibility of hyphenation. We don't know yet because this is the only time that has happened. That doesn't mean it's going to happen, but doesn't mean it won't happen either. But you have to keep also in mind that almost every cabinet member of the Trump administration openly came out in support of India after the attacks. And they said more or less that India has a right to defend itself. Tulsi Gabbard said that. Kash Patel said that. Vice President Vance said that. Elbridge Colby, Deputy Secretary of Defense, said that. Those are the 4 or 5 names that I remember and I can count right now. So keep that in mind, whatever, set aside what Trump said and whatever implications people can draw. One point here, because we are talking about President Trump here, one point. And Haritaji, I'm not trying to counter your argument, but one thing is noticeable here. When a war started, America didn't scold or say anything, or the surgical strike or whatever you call, say, and Operation Sindoor started. America didn't say anything negative about it. It just said that, okay, that was a big indication
that it is not with Pakistan. And remember, historically, Pakistan is America's ally. Still, it has lots of interest in that area, even to counter China. Yeah. He needs Pakistan. America needs Pakistan at Yeah. that location, that geography. Yeah. It is very important to note that America didn't say anything against India. That point. Some comments which largely it became the irritation or aberration or whatever we call it. I think that is because I think President Trump's way of functioning, I think. Yeah. And Yeah, the other part you is also that we have to keep in mind that historically, India is not a treaty ally of any kind of the US. US has no treaty alliance with India. Okay? None whatsoever. Okay? So keep that in mind. So yeah, the Min, America doesn't feel the same way towards, let's say, Germany or France. Historically, they did. They have no such feeling. And you talked about trust factor, Haritaji. There is also trust deficit within the U.S. establishment. Yes. From India. Okay, nobody. I mean, you can call it whatever the reason could be. I call it the legacy factor from the Cold War era and the South Asianism or left Marxist, whatever the deep state you can call it. There is a huge trust deficit, and it was on full display during the Ukrainian war. I mean, India did not go with America. So the Americans, establishment people, they don't trust India very much either. Having said that, ever since George W. Bush, situation has improved even slightly with every president positively, and it has not gone negative. And here I think would like to, Yeah. sorry, I just want to add one. The trust deficit, because it has been hesitation of history, as you have rightly pointed out, that is there. But this has deepened, like again, reignited those fears. That's one. The second thing which we have missed out in this entire thing is like during these 3 days of the war, US has silently made trade concessions to China. Okay, and then they have halted all these tariffs for 90 days. Okay, so it has been huge come down by Trump, who has said that we are going to impose 145% of tariffs to, like, now it has come down to 30% and then 10% on the other way. So the thing is like, no. What I am saying is like, it's like it has been as you said, India is not a treaty partner with the US. So that is one factor aside. But then these are the kind of factors that India needs to factor in when it has to have trade deal with US. So what I am saying is these are the kind of open chinks that you now see. Okay, I'm not outrightly saying that it is a trust deficit and all that. As you yourself has pointed out, like these kind of things would open up a kind of like suspicion in Indian mind, like Trump's statement. Okay, it's like saying it once is okay. He has repeated himself 3 times. Okay, and then even before India could announce like we have stopped the hostilities, he has issued a statement that I have brokered this. These are the kind of things which expose all those chinks. So I mean, like this is the what I have said is like these are the things that Operation Sindoor has opened out to India. So these are the things, these are the work in progress that India has to focus on all these kind of things, because like it's not like we operate only in silo, like India-Pakistan relations. So this is the extensive network. One quick point. Sorry. The last thing
on Kashmir and not Kashmir. He hasn't talked about Kashmir. The last thing Trump has said about India and Pakistan is when he was at the military base in the Middle East. Yes. And he said that I did it, and then he said maybe I didn't do it, but maybe I did. Something like that. I'm paraphrasing it, right? You can go exactly. back. You can go back and listen to it. I'm just paraphrasing. What I'm not denying that he has come back from I have brokered, so I have mediated, to I have helped, now to what you said is like perhaps I have helped them. Yes. So these are the things. So, but what I am saying is, as a responsible power and as the leading power, as the superpower, like whatever statement they have, they make, they hold a meaning, because that was the factor that opposition in India is like taking to to target the Modi government. So all these things stem from that one statement. That's all. Exactly. Yeah. One thing just last point on this one from my side is that I think after all the gaffes, let's say, or misspeaking, finally looks like somebody got to him and told him that it's going overboard. Yeah, you don't do that, or somebody actually in his team must have said that. So now he's walking back, because that there are a lot of people who are pro-India in that cabinet and who care about it. So hopefully, I don't know. I'm just saying, because the way he has went back on some of the things, maybe a sign of things to come. हरिता जी, दो बातें मैं कहना चाहूंगा इसमें, और मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मगर दो बातें कहना चाहूंगा. एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है, उनका जो स्वभाव है, उसको समझना पड़ेगा, है ना, कि वो उनको ऑल क्रेडिट इट गोज टू हिम. Yes, he is the hogger, credit hogger. So he's the credit hogger. He wants to. Everybody now knows that he wants to get the Nobel Peace Prize. दूसरी एक और बात है हरिता जी, चाइना वाली जो बात आपने कही ना, उसको थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए. That conversation was already going on. That week, it was already in the process, and that was supposed to conclude on that Friday anyway. Yes. Exactly. Yes. Anyway, so it has no connection with the India-Pakistan. Yeah, actually, जो भारत की मीडिया में लोगों ने इस तरह से उसको उछाला ना, ठीक है. और मैं ये नहीं कहता मैं भारत का हूँ और अमेरिका का भी हूँ, तो हो सकता है मेरा अपना पूर्वाग्रह है, होगा. वही तो मैं कह रही हूँ ना कि like geopolitics is something which you have to see an overarching perspective. We can't like तो वो टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होता है, स्टेटमेंट्स भी इम्पोर्टेंट भी होते हैं, सिग्नलिंग भी इम्पोर्टेंट है. तो इन सारे चीजों को मिक्स करके ही हम एक पर्सपेक्टिव को बना सकते हैं. तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इसमें इतने सारे चीजें गए हैं. तो उसके बाद और अब किस दिशा में इंडिया उसको लेके जाएगी, वो देखने वाली बात है. कि how it is going to deal with US. We know that like we have a pro-Indian the Trump cabinet has several pro-Indian faces, but then like these kind of statements is what causes like real damage to the partnership. So the point I was trying to make, Harita ji, is that it did not take even a day for the Trump from the Trump administration, the day it took office, it did not take even a couple of days to turn all its allies upside down, to turn it over. Okay, long-standing allies in Europe, Canada, Mexico. And the point I was trying to make, India does not stand there.
in that group. So if he said something that was, in Indian mind was not, not good, you have to see it in that perspective. I'm not saying that it was bad, it was good or anything. It is still bad. It's still hurtful, at least, because so much of effort you have put in. But you have to keep that into perspective, that it did not take even for them even a day to turn everything around. Yes. Right? Okay. So, and one more thing. Yeah, One more thing. And then Satish Bhai made very good comment that they did not lecture India about anything. Well, that's there. And then even Vance, during his visit, he said that we are not here to lecture, which is one good thing I really appreciate. Yes. But what has come out of this entire thing is like Operation Sindoor is a strong message back to Indian administration, saying that it is time that India should become a very powerful country. Yes. ये शक्तिशाली देश जो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि लाइक हमें शक्तिशाली देश बनना है और विकसित भारत की तरफ हमें मतलब उसकी तरफ हमें प्रयास करना चाहिए. तो ये दोनों बातें जो हैं वो उभर के आएंगे. So the take home message I believe is like it is a message to India that when it comes to conflicts, you are on your own. You have to defend your own interests, and you have to defend your own territorial interests. So you have to become very strong. So that is the message. There is no doubt about it. There is no doubt India about it. Moving in that direction.